हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट को ले लेते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर एंड सेगमेंट। सो सी लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज गिवन एज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. So 2 pi r is the circumference of the circle and this is theta is the given angle. So now if we make this circle, इस सर्किल में ये सेंटर हो गया और यहाँ से हमने एक ये अपना सेक्टर बना दिया एंड दिस इज एनी एंगल थीटा. सो अभी ये लेंथ, ये सेक्टर की लेंथ, दिस इज ए एंड बी. सो लेंथ ऑफ आर्क, सो दिस लेंथ ऑफ आर्क ए बी. So this length of arc AB, this is given by theta by 360. Theta is this angle of the arc. Theta by 360. 360 is the total angle of the circle. So theta by 360 into 2 pi r. 2 pi r is the perimeter and r is the radius of the circle. Similarly, we will take up the area of the sector. For the area of the sector, for any circle with center O, this angle is theta. So area of sector will be theta by 360 into pi r square. So theta remaining the same, this is the sector angle divided by the total angle of the circle 360 into pi and r square. R is the radius of the circle. So this will give you the area of this sector, this complete sector, area of this complete sector. So now if we find out the area of the segment, तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए देखते हैं. एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं. सेगमेंट किस रीजन को बोलते हैं. ये एक अभी अपने सर्किल को बनाया हुआ है, दिस इज विद सेंटर ओ. ये सेक्टर एंगल ले लिया थीटा. इस रीजन को अभी हमने ए लाइन को ज्वाइन किया, ए बी. सो दिस पॉइंट, ये जो कंप्लीट रीजन आ रहा है, दिस इज नाउ द सेगमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट. सो दिस इज द सेगमेंट. इसमें भी अभी क्या, ये रीजन हमने बनाया है, ये ए बी वाला पार्ट, ये भी सेगमेंट आ गया. सो वी कॉल इट एज माइनर सेगमेंट. दिस इज द माइनर सेगमेंट. और इसके बाद वाला जितना भी आउटर रीजन रहेगा, ये वाला रीजन कंप्लीट रीजन. सो दिस रीजन इज द मेजर सेगमेंट. सो दिस इज द मेजर सेगमेंट. So this is the major segment. Similarly sector के केस में भी ये वाला जो रीजन है, so this region is the minor sector. और इसके बाद वाला जितना भी रीजन हुआ इस एंगल से, so this region is major sector. This we can mark as minor sector. So this is the minor sector, major sector. अभी इसमें सेगमेंट की एरिया, खाली हमें ये एरिया चाहिए, तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, पूरे सेक्टर की एरिया निकाल दूँगा. सो एरिया, सेक्टर की एरिया निकाल के उसमें से क्या करूँगा, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल की एरिया को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो फिर मेरे को क्या मिलेगी, सेगमेंट की एरिया. सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल के एरिया सेपरेट करूंगा तो मेरे को सेगमेंट के एरिया मिलेगी, वो भी माइनर सेगमेंट.
इनकेस अगर मेजर सेगमेंट की एरिया निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट सर्किल की एरिया निकाल के उसमें से माइनर सेगमेंट की एरिया सेपरेट कर दूंगा, तो मेरे को रिमेनिंग रीजन की जो एरिया मिलेगी दैट विल बी द एरिया फॉर द मेजर सेगमेंट। अब इसके हम यूजेस को देखते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उसके एग्जांपल्स को, क्वेश्चंस को करते हैं। So now come to question number 1. Find the area of the sector of a circle with radius 6 cm and the angle of sector is 60 degree. एक ये मैंने सर्किल कंसीडर कर लिया विद सेंटर O और ये एंगल दिया हुआ है सेक्टर का एंगल 60 डिग्री। Now we need to find out the area of the sector, means this complete area we need to find out. So this is the area of the sector. So ये सेक्टर की एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। So we'll use our formula. So area of sector. So area of sector we can mark it A and this is B. So area of the sector AOB. So this will be equals to theta by 360 degree into pi r square. So this is the area, so we will take up pi r square. So theta is already known, this is 60 degree divided by 360 into 22 by 7 into r. R is already given to us, so this is 6 centimeter. So this is 6 square. Now we can solve it. So this is 1 and 6. So this is 1 by 6 into 22 by 7 into 36. So we can solve it. So 2 3 ja and 2 11. So we multiply and all we get, this will be 3 times more. Even this can be solved, 3 1 ja 3, 3 times 12. So this will be 132 divided by this 7 centimeter square. So this is the area. So we got the area of sector. Area of sector is 132 by 7 centimeter square. So this way we got the area of the sector, simply substituting the value of the radius and sector angle in the given formula. So coming to question number 2. Find the area of the quadrant of a circle whose circumference is given to us. So circumference is already given. We'll make a circle. So this is the circle. This is the center of the circle O and this is the quadrant. Quadrant means this is having 90 degree. So quadrant means having 90 degree. 1/4 of the circle is the quadrant. So we need to find out area of this region. So sector angle is already known to us and perimeter is given to us. Now circumference of the perimeter. Circumference of the circle, this is given as 22. So this is 22 centimeter. So this is 2 pi r is equals to 22 or simply 2 into 22 by 7 is equals to into r is equals to 22. So 2 pi r. So we can solve it. So r is equals to 22 into 7 divided by 22 into 2. 22 cancel. So this is 7 by 2 or we can write it as 3.5 centimeter. So we got the radius of the circle. This is 3.5 centimeter. So this is 3.5 centimeter. Now we can find out the area of the quadrant. So area of quadrant will be equals to theta by 360 into pi r square. So theta is 90 divided by 360. So theta for a quadrant is 90 degree into pi 22 by 7 into r square
We need to substitute r square. So r is 3.5 whole square. So this is 1 by 4. So 1 by 4 into 22 by 7 into 3.5 into 3.5. So further we can solve it. So 2 times, so this will be 11, 2 times 4, and this can be solved as 7 1 ja 7.5. So on simplification we got this as 77.8 by 8 centimeter square. So area of quadrant is equals to 77 by 8 centimeter square. So coming to question number 3. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. So length of the minute hand is already given to us. Length of the minute hand means this is simply a radius given to us. So this is the radius given to us. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. So 5 minutes में एरिया कितना उसने स्वैप किया हुआ इतना निकालना पड़ेगा अभी. नाउ सी दैट एक अगर हमने वॉच को बनाया हुआ उसमें, तो इस वॉच में क्या होता है 12 इक्वल डिविजन्स होते हैं. So this is 12, this is 6 and here it is 3 and here it is 9. So this is 1, this is 2. अभी हमने इतने को मार्क किया हुआ है. अभी बोला 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वैप करेगा, तो 5 मिनट्स से भी सी ये मैंने वॉच को लिया हुआ है अभी. सो 5 मिनट्स इज दिस रीजन नाउ. सो ये सेक्टर का रीजन बन रहा है मेरे को 5 मिनट्स के लिए. इसकी एरिया निकालनी है अभी. तो अभी 5 मिनट्स का हमारे पास कौन सा ये रीजन रहा. सो दिस रीजन इज द फॉर द 5 मिनट्स. अब इसका हम एंगल को निकालते हैं. एंगल देखिए अभी इसमें एक वॉच में कितना होता है 12 इक्वल डिविजन्स होते हैं और कंप्लीट ये क्या सर्कुलर शेप में रहता है, तो कंप्लीट सर्किल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री. सो वी कैन फाइंड आउट एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू टोटल एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स. सो टोटल एंगल फॉर दिस इज 360 और एक वॉच में कितना डिविजन्स होता है 12 डिविजन्स. तो एक डिवीजन का आ जाएगा अभी, दिस इज नाउ 1 डिवीजन. सो एक डिवीजन का एंगल कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 12. सो दिस विल बी 30 डिग्री. 30 डिग्री अभी आ गया. सेक्टर एंगल मुझे मिल गया. रेडियस इज ऑलरेडी गिवन 14 सेंटीमीटर. नाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया. सो एरिया swept by minute hand in 5 minutes is equals to, so this will be theta by 360 into pi r square. So theta is 30 degree divided by total angle 360 degree into 22 by 7 into r square. R is already given to us 14. So this we can simplify. This is 12 and 2 6 ja to 11. So this is 11 into 14 into 14 by 7 into 6. So this is 2 3 ja and 2 7 ja and 7 cancels. So this we got as 154 by 3 centimeter square. So area swept is equals to 154 by 3 centimeter square. So simply पहले हमने क्या किया हुआ है सेक्टर एंगल निकाला हुआ है. सेक्टर एंगल निकाल के फिर जो रेडियस दिया हुआ उसको यूज करके फॉर्मूले में पुटअप किया. Now coming to question number 4. A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center of the circle. So पहले एक सर्किल बना लेते हैं. अभी ये सेंटर हो गया सर्किल का O पॉइंट पे और
ये 90 डिग्री सब्सटेंस कर रहा है कोई भी कॉर्ड ए बी. So this is the segment. So in first part we need to find out the area of the minor segment. So this region is the minor segment. So area of minor segment means अभी हम complete एरिया निकाल के, ये देखिए ये इस तरह से सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है कंप्लीट. तो इस कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से मैंने अगर ये ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे को खाली खाली ये सेगमेंट की ही तो एरिया मिलेगी. ये डॉटेड रीजन जो बनाया हमने, ये डॉटेड रीजन के एरिया. तो अभी हमने क्या किया, ये कंप्लीट सेक्टर के एरिया निकाल लिया. कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से अगर हम ये ट्रायंगल के एरिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी एरिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे को सिर्फ ये डॉटेड रीजन के एरिया मिलेगी. यही डॉटेड रीजन क्या है, सेगमेंट है. तो अभी हम इसी फंडामेंटल को यूज करते हैं आगे. So area of minor sector, area of minor sector is theta by 360 into pi r square, and radius is already given to us. This is 10 centimeter. So area of minor sector is equals to theta is 90 divided by 360 into 22 by 7 into r square means this is 10 into 10. So 91 जा 94 जा and 4 से डिवाइड करते हैं 2 2 जा 2 11 and 2 1 जा 2 5. So this is now 550 divided by 7 centimeter square, or simply we can simplify this further and can write a decimal value. So this is 550 divided by 7. So this is 78.57 centimeter square. So area of minor sector is 78.57 centimeter square. Now we will need to find out the area of this triangle. So area of triangle AOB. So this is a right angle triangle. So area will be half base into height. So this is 1 by 2. Base is 10 and height is 10. So this is now 50 centimeter square. So therefore area of minor segment will be equals to area of minor sector, minus area of triangle AOB. तो एरिया ऑफ अभी ये माइनस सेगमेंट की क्या होगी, एरिया ऑफ कंप्लीट सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. So this will be area of minor sector we already got. This is 78.57 minus this area. This is 50. So we got this is 28.57 centimeter square. So we got the area of the this minor segment also. This is 78, and for that minor sector this is 78.57. Now area of circle is pi r square. So this will be 3.14 into 10 into 10. So this is 314 centimeter square. अभी मेजर सेक्टर की मुझे एरिया निकालनी है. तो मेजर सेक्टर की एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ सर्किल माइनस, ये देखिए अगर हमने एक सर्किल को ऐसे बनाया और ये हमारा माइनर सेक्टर रहा, ये वाला रीजन माइनर सेक्टर का, तो मेजर सेक्टर क्या है, ये कंप्लीट रीजन है मेजर सेक्टर का. तो अगर मैंने कंप्लीट एरिया ऑफ सर्किल की निकाल ली, सर्किल के एरिया में से अगर हम ये रीजन जो माइनर सेक्टर है ये रीजन अगर सेपरेट कर देंगे तो मेरे को ये बाकी का बड़ा वाला रीजन मिलेगा कि नहीं. तो अभी हमने वही किया हुआ है कि एरिया ऑफ सर्किल निकाल के जो माइनर सेक्टर की एरिया निकाली हुई है उसको अभी हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे इसमें से. सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर is equals to
area of circle minus area of माइनर सेक्टर। तो सर्किल के एरिया में से भी माइनर सेक्टर की एरिया को सपरेट करेंगे। सो दिस विल बी एरिया ऑफ सर्किल इज 314 माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज 78.57. So this we can subtract now. So this is 235.43 centimeter square. So we got over all the areas. So now coming to question number 5th. Question number 5th is in a circle of radius 21 centimeter. एक सर्किल दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है हमें 21 सेंटीमीटर। So in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. So कोई एक आर्क है, ये 60 डिग्री सेंटर पे सबटेंड कर रहा है अभी। Find the length of the arc. So we need to find out the length of the arc. So first part is length of arc. So length of arc is again theta by 360 into 2 pi r. So this we can write theta is 60 degree divided by 360 into 22 by 7. Before that is a 2 into 22 by 7 into r is 21. So this is 1, this is 6, 2 1 ja, this is 3 and 7 1 ja, 7 3 ja. So we got 66 by 3, or simply we can find out 3 1 ja 3. So this is simply 22 centimeter. So length of the minor arc we got 22 centimeter. Now coming to the second, area of the sector formed by the arc. Area of the sector, this is theta by 360 into pi r square. So theta is again 60 degree divided by 360 into pi is 22 by 7 into r square is 21 into 21. So on simplification, 6 times, and this is 7 1 ja, 7 3 ja, 3 1 ja, 3 2 ja, 2 11, then 11 into 21, 231 centimeter square. So this is the answer for the second part. Now coming to the third part, area of the segment formed by the corresponding chord. So area of the segment means we need to find out this area. Area of the segment again, area of the minor sector minus area of this triangle. So first of all we will find out the area of the triangle. Now see that in triangle this angle is given as 60 degree and this is 60 degree now, and these two angles will be equal because this side and this side both are the radius. So since this side and this side both are the radius, so therefore this angle and this angle will be equal. So we can take up as x and this is also as x. So now in triangle ABC, in triangle A, or we can take this point center as O. So in triangle AOB, so this is x plus 60 degree is equals to 180 degree. So 2x plus 60 equals to 180 degree, or 2x equals to 180 minus 60 degree. So 2x equals to 120 degree, or x is equals to 60 degree. So x is 60 degree means all the angles are 60 degree. So this is an equilateral triangle now. So therefore triangle AOB is an equilateral triangle.
So this is an equilateral triangle. Now we know that area of equilateral triangle this is equals to root 3 by 4 side square. So root 3 by 4 side square, therefore we can find the area. This is root 3 by 4 side square, side is the radius, so this is 21 square. So now we can solve it. So this will be 441 root 3 divided by 4 centimeter square. So this is the area of this triangle. Now we can find the area of the segment. So area of segment is equals to area of sector minus area of triangle. So area of segment is equals to area of the sector we already got. This is 231. So this is 231 minus this is 441 root 3 by 4. So this is 441 root 3 by 4 centimeter square. So we got this area also. Now coming to question number 6th. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. So we'll make a circle. This is the center of the circle and the radius is already given. So this is the 15 centimeter. So chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree. This sector angle given to us, this is 60 degree. At the center, find the length 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle. So we need to find out the area of the minor and major segment. So this is, if we join these two lines, so this area, this is the minor segment and the remaining area will be the major segment. So first of all we will find out the area of this minor segment. So we can find area of sector. So area of sector would be theta by 360 into pi r square. So this will be equals to theta is 60 degree divided by 360 into 22 by 7 into r square. So r is 15 into 15. So now we can solve it. So this will be equals to 1 by 6, then 2 times 11, then this will be 3, then 3 1 ja, 3 5 ja 15. So this we can find out now. So this is 825 divided by 7 centimeter square. Now see that in triangle AOB, we will take this angle as x and this angle as x. So in triangle AOB, x plus 60 degree, this will be equals to 180 degree. Sum of all three angles will be equals to 180 degree, angle sum property of the triangle. So this will be 2x plus 60 equals to 180 degree. So from here we will get x equals to 60 degree. So अभी इस ट्रायंगल में भी सारे एंगल कितने आ गए, 60 डिग्री आ गए. देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. So we can find out the area of an equilateral triangle AOB will be equals to root 3 by 4 into side square. So we got
root 3 as it is by 4 into side. Side is 15, so this will be 15 into 15, 15 square. So this will be 225 root 3 by 4 centimeter square. So now we can find the area. So area of minor segment. So area of minor segment will be equal to the area of sector minus area of the triangle. So this will be area of minor sector minus area of triangle. So this will be equals to area of the minor sector we already got. So this is 825 by 7 minus this is 225 root 3 by 4 centimeter square, or we can simplify it. So this will be 825 by 7. So this is 117.86 minus this is 97.43. So on subtraction we will get, so this is now 20.44 centimeter square. So this is the area for the minor segment. So now area of circle is pi r square. So this is 22 by 7 into r is 15 into 15. So this will be, so this is 707.14 centimeter square. Now area of major sector. So this is now area of major segment. So this will be area of circle minus area of minor segment. सो मेजर सेक्टर के लिए, मेजर सेगमेंट के लिए एरिया देखिए, सपोज एक मैंने ये सर्किल बनाया अभी, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये रीजन हमारा रहा अभी माइनर, सो दिस इज द माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट हो गया, और मेजर सेगमेंट की एरिया निकालनी है। सो मेजर सेगमेंट इज दिस रीजन नाउ, दिस कंप्लीट रीजन। सो इस रीजन की एरिया हम निकाल सकते हैं अभी, एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट विल गिव अस द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। सो मेजर सेगमेंट के एरिया को ये मैंने लिखा हुआ अभी, एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। सो दिस विल बी एरिया ऑफ द सर्किल वी ऑलरेडी गॉट 707.14 माइनस area of the minor segment is this is 20.44. so on subtraction we will get, so this is 686.7 centimeter square. So we got all of our answers. Now coming to question number 7th. A chord of a circle of radius 12 cm substance and angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. So this is the circle for us, and this is the center of the circle, and from this center of the circle this angle is 120 degrees in. So 120 degree angle is given to us. We will join these 2 points. So this is A and this is B. So a chord of a circle of radius 12 centimeters. So this radius is given to us 12 centimeter. Substance and angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. So we need to find out area of this segment now.
So to find out the area of this segment now, see, first of all we will find out the area of the sector. So area of the sector is theta by 360 into pi r square. So this is theta is 120 divided by 360 into pi is 22 by 7 into r square is 12 into 12. So we can simplify it. This is 1 time, 3 times, and 3 1 ja, 3 4 ja. So simplifying on this, we can get, so this is 150.86 centimeter square. Now we need to find out the area of this triangle. So इस ट्रायंगल के एरिया को अभी हम निकाल के क्या करेंगे, जो हमारी माइनर सेक्टर के एरिया आई उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब ट्रायंगल के एरिया को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे. ये हमने ट्रायंगल को अभी सब्ट्रैक्ट बनाया हुआ है. इस ट्रायंगल को, दिस इज ओ एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी. इस ट्रायंगल को अभी हमने सेपरेटली बनाया हुआ है. समझने के लिए कंसेप्ट को क्या है ये. अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. So we will draw a perpendicular bisector from this region. So this is now perpendicular bisector. We'll make this point as D point. So एक अभी हमने perpendicular bisector को ड्रॉ किया हुआ है और रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर का. So this is the perpendicular bisector, means this side is equals to the this side. ये दोनों साइड बराबर हो गई और ये 90 डिग्री आ गया. अभी इसमें देखिए ये वाला एंगल क्या होगा, दिस कंप्लीट एंगल वाज गिवन टू अस 120, तो इतना सा एंगल ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री. दिस विल बी द हाफ ऑफ दिस, बिकॉज अगर हम इनकी कॉन्ग्रेंसी को भी देखते हैं, सो दिस एंगल दिस साइड इज इक्वल टू द दिस साइड. नाउ वी कैन प्रूव द कॉन्ग्रेंसी ऑल्सो. सो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD, OA is equals to OB, this is the radii, and angle D is equals to angle D equals to 90 degree by construction, and this OD is equals to OD, this is common. So we got triangle AOD is congruent to triangle BOD. This is by RHS. So therefore I can say this angle is equals to this angle by CPCT, means this is AOD. Angle AOD is equals to angle BOD by CPCT. So by CPCT these two angles are equal. Now we will concentrate in this triangle only, in triangle ABD. So ABD में दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. नाउ ये 60 हो गया, ये 90 हो गया. सो दिस इज 150, 180 माइनस 150 विल गिव यू 30. अब इसमें अभी हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लगाएंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अभी हम क्या करेंगे, ये साइड फाइंड आउट करेंगे और ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे. सो इसमें अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम लगाते हैं, नाउ इन ट्रायंगल AOD, इस ट्रायंगल AOD में, सो दिस इज नाउ sin 30. सो sin 30 इज इक्वल्स टू, और sin थीटा इक्वल्स टू वी नो दिस इज द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हमने. सो sin थीटा इज नाउ 30 डिग्री. सो दिस इज sin 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज OD divided by hypotenuse is 12 already given. Sin 30 is 1 by 2, this is equals to OD by 12. On cross multiplication we will get OD is equals to 6 centimeter. So OD अभी 6 centimeter आ गया यहाँ पे. अभी OD 6 centimeter आ गया, means we got the perpendicular height. This height has 6 centimeter. So अभी ये height हमारी 6 centimeter आ गई by calculation. Now we can find out AD also. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से AD और OA, हाइपोटेन्यूज और बेस में क्या रिलेशन आता है, कॉस से.
सो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अभी हम AD को भी निकाल लेते हैं सिमिलरली। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस 30 डिग्री is equals to, here base is AD, so we can write AD by hypotenuse is OA. So cos 30 degree is equals to AD as it is, so this is AD by hypotenuse is 12. So cos 30 is equal to the sin 60. So this is root 3 by 2 equals to AD by 12. On cross multiplication it will be twice of AD will be equals to 12 root 3, or simply AD will be equals to 6 root 3 centimeter. So now AD is the half of this AB. So we can find out AB also. So AB is twice of AD. So this will be 2 into 6 root 3. So this is 12 root 3 centimeter. So we got this is the 12 root 3 centimeter. Now we can find out the area of this right angle triangle. So this right angle triangle का भी area क्या होगा, base into height. So base we already know and height is already known. Therefore area of triangle AOB, this will be half base into height. So we can find out, therefore area of triangle AOB will be equals to 1 by 2 into base. Base is complete length AB. So AB we got 12 root 3. So this will be 12 root 3 into height. Height is 6. So this is 2 1 ja 2 6 ja. So this will be now 36 root 3 centimeter square. Now we can find out the area of the segment. So area of segment will be equals to area of sector minus area of triangle. So area of segment is equals to area of the sector we already got. So area of the sector is, this is 150 the 150.86 minus this is 36 root 3. So we can simplify it now. So we can take up root 3 as 1.73. So this will be now 88.44 centimeter square. So this we got. We can simply multiply 36 by 1.732 and we'll subtract from this, we'll get 88.44 centimeter square. तो सिंपली एक बार देख लीजिएगा अभी क्विक रिकैप के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने को निकाल दिया। अभी माइनस सेक्टर के एरिया निकाल सकते हैं सीधा 3 बाय वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से। ये एरिया आ गई सेक्टर की। और अभी मैंने क्या किया, ट्रायंगल के एरिया को निकाला हुआ। ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए देखिए अभी इसमें अभी ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया इस वाले ट्रायंगल में। पहले ये हाइट को निकाल दिया साइन थीटा यूज करके, फिर ये बेस को निकाल दिया कॉस थीटा यूज करके, फिर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकाला हुआ है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a page at one corner of a square. So एक कोई स्क्वायर दिया हुआ है इस तरह से, उसके किसी एक कॉर्नर पे, स्क्वायर का हमें पता है कि एंगल क्या होता है 90 डिग्री, उसके एक किसी कॉर्नर पे हॉर्स को हमने टाई किया हुआ है और वो इस तरह के सेक्टर में क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है। तो स्क्वायर ऑफ द ग्रासी फील्ड ऑफ द साइड 15, साइड इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दिस इज द 15 मीटर्स by means of a 5 meter long rope. So this is now 5 meter from this to this is the 5 meter. Find the area of the part that field in which horse can graze. So area of the part of grazing. So area of the part of the grazing is same as the area of the sector.
So this is same as the area of sector means this theta by 360 into pi r square. So theta is 90 divided by 360 into pi is 22 by 7 into r square. R is 5 into 5. So this will be equals to 1 by 4, then 2, then 11. So this will be 55 into 5 by 14. So this we can simplify. So this is 19.64 centimeter square. Similarly, we can find the next part. So this is the part where a horse can graze, area of this region. So coming to the second, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long. So we can find the second area. Second area of grazing, this will be again theta by 360 into pi r square. So this is theta is 90 same divided by 360 into 22 by 7 into r square. R is now 10, radius is 10. So this is 1, 4 and 2, 11, then 2 times this is 5. So this is now 550 by 7 centimeter square, or we can simplify it. So this is 78.57 centimeter square. So now we can find out the increase in area. So increase in grazing area. So increase in grazing area means this area, final area 78.57 minus the initial area 19.64. So this will be equals to, so this is 58.93 meter square. So this is again meter square, this is in the meters. So this is the increase in area. So coming to question number 9th, a brooch is made with a silver wire in the form of a circle of diameter 35 mm. So this is the circle now, and diameter is already given to us. This is 35 mm. The wire is also used for making the 5 diameters which divide the circle into 10 equal parts as shown in the figure. Find the total length of the silver wire used. So first of all, we will find out the total length of the wire used. So length of the wire will be equal to the perimeter plus diameter. So length of wire used. So length of wire used will be equal to perimeter plus 5 into diameter. So 5 diameter, बिकॉज अभी क्या इसमें 5 डायमीटर भी तो लिया उसने, तो 5 डायमीटर वो भी क्या है सिल्वर के ही बने हुए और प्लस ये आउटर बाउंड्री. तो आउटर बाउंड्री कितना होगा पेरीमीटर के बराबर प्लस 5 इंटू द डायमीटर. सो लेंथ ऑफ वायर used will be equals to perimeter is 2 pi r plus 5d. d stands for the diameter. So this is 2 into 22 by 7 into r. r is 35 by 2. So this is 35 by 2 into 5 into 35. So this is 7 1 ja 7 5 ja 2 11. So now we got 110 plus 175 mm. Now we can add up this. So this will be 285 mm. So total length of the wire we got 285 mm.
Now the area of the each sector of the bush. So we need to find out the area of the sector. So area of sector will be equals to theta by 360 into pi r square. So here now theta will be, because there are the 10 subdivisions, so for one division the angle will be, theta will be 360 divided by 10, because there are the 10 equal divisions, so this will be 36 degree. So we got theta is 36, so this will be 36 by 360 into 22 by 7 into r is 35 by 2 into 35 by 2. Now we can simplify it. This is 1, this is 6 times, so this is 2 3 ja 2 11, then 7 1 ja 7 5 ja. Now we can simplify this, so this will be on further simplification we can get it into decimals also. So this is equals to 160.42 centimeter, this is mm square. So we got the area of each sector. सिंपली अभी हमारे को जो फिगर दिया हो उसमें कितने 10 सब डिविजन्स आ रहे हैं, 10 सब डिविजन्स आ रहे हैं, तो वन डिवीजन का भी हमने एंगल निकाल लिया 36 डिग्री। और पहले वायर की लेंथ को पूछा हुआ, तो वायर की लेंथ क्या होगी, इस तरह से सर्कमफ्रेंस कंप्लीट बाउंड्री और प्लस ईच डायमीटर, तो 5 डायमीटर है तो 5 इंटू मैंने 35 mm कर लिया और प्लस ये 2 पाई आर, सो टोटल लेंथ ऑफ द वायर ये आ गई। और एरिया ऑफ द ईच सेक्टर विल बी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर इज 35 बाई 2, इसको सिंप्लीफाई किया वी गॉट 160.42 mm स्क्वायर। So coming to question number 10th, an umbrella had the 8 ribs which are equally spaced, assuming the umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. So एक अभी हमने सर्किल को बना लिया इसमें, और इसमें 8 रिब्स है टोटल, रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर का। दिस इज द ओ, दिस वी कैन टेक अप एज ए एंड बी। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो दो कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच में, इसी तरह से अभी कितनी इसमें 8 रिब्स हैं, तो अभी हमें दो कंजिक्यूटिव रिब्स का एरिया निकालना, मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस सेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील फाइंड आउट द सेक्टर एंगल। सो सेक्टर एंगल विल बी इक्वल्स टू टोटल एंगल डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स आर 8, so we can find out, so this is 45 degree. Now we got the sector angle, so area of sector is equals to theta by 360 into pi r square. So theta is now 45 divided by 360 into 22 by 7 into r square is 45 into 45. So now we can solve it. This is 1 time, this is 8 times, so 2 11, 2 times 4. So on some simplification we can get this as 7 into 4, this is 28 as denominator, and it will be 275 centimeter square. So area between two consecutive ribs between the two consecutive ribs is 275 divided by 28 centimeter square. Coming to question number 11th, question number 11th, this is a car has the two wipers, each
डू नॉट ओवरलैप। कार के दो वाइपर हैं, दोनों ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115। सो सपोज this angle is given 115 degree, sector angle is given, and this length is 25 centimeter, and this is 0 in the the center of the circle. Now we need to find out this area. So this area is again the sector area. So we can find area swept by one blade. So area swept by one blade will be equals to area of the sector. So this is theta by 360 into pi r square. So area swept by one blade is equals to theta is 115 divided by 360 into 22 by 7 into r square is 25 whole square. So we can simplify it. We can simplify now 5 3 ja, then 5 7 ja, then 2, then 2 36 and 2 11. So now we can simplify this. So this comes out to be on simplification 627.48 centimeter square. So area swept by two wipers. So two wipers, this will be 2 into area swept by one wiper 627.48. So this will be equals to, so this is 1254.96 centimeter square. So this is the total area. First of all, we find the area of the one sector, means area swept by one wiper. So area swept by one wiper into area swept by two wipers will be area swept by one wiper into 2. So this will give us area swept by the two wipers. So coming to question number 12th. To warn a ship for the underwater rock, a lighthouse spreads a red colored light over a sector angle. So sector angle is already given to us. So this sector angle is 80 degree to a distance of, so this angle, now this radius is given to us, this is 16.5 kilometers. Find the area of the sea. So this sector area we need to find out. So area of C. So area of C will be again area of the sector. So theta by 360 into pi r square. So theta is now 80 degree divided by 360 into 22 by 7 into r square is 16.5 whole square. So now we can simplify it. 0 0 4 2 ja 8 4 9 ja. So this will be equals to 2 into 22 into 16.5 into 16.5 divided by 9 into 7. So on simplification we got this is equals to 189.97 kilometer square. So area of C we got this is 189.97 kilometer square. So over this area the warning will spread. So now coming to question number 13. A round table cover has just 6 equal designs. So it is given that 6 equal designs. So this is now a circular table having this type of designs.
So this type of the designs, it is given that these are the designs. These are the circular designs already given. A round table cover has a 6 equal designs. So 6 equal design. For one design, the sector angle will be 60 degree now, because 6 equal divisions हैं अभी यहाँ पे. So we can find sector angle. Sector angle will be 360 divided by 6. So this is 60 degree. The radius of the cover is already given. So this is 28 centimeter is the radius of the cover given to us. Find the cost of making the design at the rate of this. So cost of making designs, now this design only. So we need to find out the area of this segment only. So to find out the area of the segment, first of all we will need to find out the area of sector. So area of sector will be theta by 360 into pi r square. So theta is 60 divided by 360 into 22 by 7 into r is given 28 into 28. We can simplify it. So this is 1 times 6 times. So 2 3 ja, 2 11, 7 1 ja, 7 4 ja. So we can simplify it. So this will be now. So this is 410.67 centimeter square. So this we got area of minor sector. Now area of triangle, we can take it as A and B. So area of triangle AOB. Since AOB is again this side is equals to this side. So this is an equilateral triangle AOB. We can take this angle as x, this angle as x. So we can write it down in triangle AOB, x plus 60 degree. This is equals to 180 degree. So 2x is equals to 180 degree minus 60 degree, or x will be equals to 60 degree. So we got x as 60 degree. Since all three angles are equal, so therefore it is an equilateral triangle. So therefore triangle AOB is an equilateral triangle. So area of equilateral triangle, so area of equilateral triangle is given root 3 by 4 into side square. So this will be area of equilateral triangle. So this will be equals to root 3 by 4 into side. Side is already given 28. So this is 28 square. Now we can solve it. So this will be 1.732. रूट 3 को क्या ले सकते हैं 1.732 into 28 divided by 4. So on simplification we can get. So this is 339. So this is 339.47 centimeter square. Now we can find the area of the segment. So area of one segment. Area of one segment will be area of sector. Area of sector minus area of triangle. So this will be area of one segment will be equals to area of the sector we already got. This is 410.67 minus this area. This is 339. So this will be equals to 410.67 minus 339.47. So this will be equals to, so this is 71.2 centimeter square.
Now we need to find out the area of these 6 designs. So first of all we got the area of one design only. So area of 6 designs would be 6 times. So area of 6 designs will be equals to 6 into 71.2. So this will be 427.2 centimeter square. So this is the area now, and we need to find out the cost. So cost will be equals to 427.2 into the cost is given as 0.35. So into 0.35. So this is equals to rupees. So this we got as rupees 162.68. So this is the cost of complete design. So simply अभी हमने इसको कैसे किया हुआ है, एक सेक्टर को लिया हुआ है बिकॉज देयर आर द 6 इक्वल डिवीजन्स, 6 इक्वल डिवीजन्स है अभी यहाँ पे। तो एक डिवीजन्स के लिए अभी हमने क्या किया, सेक्टर एंगल निकाल लिया। तो एक डिवीजन के लिए एंगल कितना हो जाएगा 60, उसके रिस्पेक्ट में भी हमने सेक्टर का एरिया निकाल दिया। सेक्टर एरिया निकालने के बाद में क्या, ये ट्रायंगल अभी हमारा क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया निकाल दिया √3/4 साइड स्क्वायर करके, जो एरिया आया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो अभी सेक्टर के एरिया में से अभी हमने ट्रायंगल के एरिया को सेपरेट किया हुआ, तो क्या मिलेगा, एक सेगमेंट का एरिया। एक सेगमेंट का एरिया इसी तरह के कितना 6 सेगमेंट है, तो इंटू 6 किया हुआ है, जो भी टोटल एरिया आया दैट इनटू द रेट गिवन। सो इस रेट से अभी मल्टीप्लाई किया। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14th, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेक्टर एंगल P। अभी एक कोई मैंने सर्किल बना लिया, इसका सेक्टर एंगल ये दिया हुआ है थीटा, तो इसका अभी एरिया निकालना है हमें। सो एरिया अभी क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर विल बी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज हियर P, सो दिस विल बी P बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो ऑन मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by 2, 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी, दिस विल बी 2 इंटू P टाइम्स इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2। So this on simplification we got P into 2 pi r square divided by 720. So this is the sector area now. So area of sector is equals to P into 2 pi r square divided by 720 degree. So this we got the area. So correct option is So correct option is D for us. So we have completed our exercise. So this is 12.2. Thank you very much. Okay students, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस को भेज सकते हैं। आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।